Naina, can I start again? So, good afternoon, everyone. I'm Dr. Pradnya Supe. I'm a consultant obstetrician and gynecologist. And today I will be speaking upon the topic of investigations in pregnancy. So, investigations in pregnancy, the biggest question lot of women have. अनेक औरतों को ये सवाल होता है कि अभी प्रेग्नेंट तो है, हमने घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, पॉजिटिव आया है, आगे क्या? So the first thing that you need to do is go visit your doctor. So the first thing that your gynecologist is going to do is check your weight. आपका वजन चेक करेंगे. Your weight has to be checked at your every visit. So that is the first and the foremost investigation that you need to do. The second investigation that is always done at every visit is checking your blood pressure. आपका ब्लड प्रेशर करीबन ऊपर का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं वो 140 के नीचे होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो बोलते हैं वो 80 के नीचे होना चाहिए. अगर आपका ब्लड प्रेशर उतना है तो अच्छी बात है एंड दिस विल बी चेक्ड एट एवरी विजिट. Moving on, what are the blood investigations that you need to do during pregnancy? प्रेगनेंसी में कई खून की जांचें करना बहुत जरूरी होता है. तो सबसे जरूरी होता है सीबीसी या हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं. अभी ये करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में आयरन रिक्वायरमेंट जो होती है, द आयरन रिक्वायरमेंट दैट यू हैव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीजेस बिकॉज बोथ यू एज वेल एज योर बेबी आर गेटिंग द आयरन ऑफ योर बॉडी. तो इसके वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर जिसे कहते हैं, जो बीच के 3 महीने होते हैं, द हीमोग्लोबिन गोज डाउन, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. इसलिए हीमोग्लोबिन करना बहुत जरूरी है. कब करना होता है? द फर्स्ट विजिट दैट यू गो फॉर योर हीमोग्लोबिन नीड्स टू बी डन. इफ इट इज गुड दैट इफ इट 11 और अबाउ, you don't need to repeat it again and again except for the time when you reach the 9th month and somewhere in between during your 5th to 6th month as well. बहुत बार अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपको आयरन टैबलेट्स और रेगुलरली और ज्यादा डोज में लेना भी जरूरी हो सकता है. दूसरा इन्वेस्टिगेशन जो बहुत ही जरूरी है ये है ब्लड ग्रुप. अभी ब्लड ग्रुप नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ. उसके साथ में और एक जो हम सुनते हैं जो जुड़ा होता है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एंड दिस इज कॉल्ड एज द RH फैक्टर. तो ये क्यों जरूरी है? अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है सो यू डोंट नीड टू वरी, एवरीथिंग इज फाइन. बट अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, इफ योर ब्लड ग्रुप इज ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, तो आपके हस्बैंड का और आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप करना इक्वली जरूरी है. अगर उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और आपका नेगेटिव हो तो आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपके बेबी को तकलीफ हो सकती है. इसलिए ये करना जरूरी है और आपकी गायनेक आपको बताएंगे कि इनके लिए सर्टेन इंजेक्शन लेना भी इक्वली जरूरी होता है. तीसरा इन्वेस्टिगेशन जो बहुत ही जरूरी है जिसे हम कहते हैं यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी या यूरिन इन्वेस्टिगेशन. यूरिन क्यों होता है? एक तो यूरिन में इन्फेक्शन है कि नहीं जानना बहुत जरूरी है. प्रेगनेंसी में हमेशा यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और प्रेगनेंसी में पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होती है. देयर आर नो सिम्टम्स दैट अ प्रेग्नेंट पेशेंट हैज, प्रेग्नेंट वुमन हैज. सो यूरिन करना बहुत जरूरी है. और यूरिन में हम क्या देखते हैं, जैसे प्रोटीन कितना है, शुगर है, अगर आपको डायबिटीज है तो इसके लिए यूरिन करना जरूरी है. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन या नेक्स्ट रिपोर्ट विच इज इम्पोर्टेंट इज आपके शुगर्स. शुगर्स हम कब करते हैं और कैसे करते हैं? तो जब भी आप पहली बार आपके गायनेक के पास जाते हैं, योर फर्स्ट विजिट, यू हैव टू गेट योर शुगर्स डन. सो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट. इधर हम फास्टिंग और पोस्ट लंच जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं. अगर आप एकदम ही गाइडलाइन वाइज जा सकते हैं, डिप्सी टेस्ट जो होता है उसमें आप 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद 2 घंटे बाद आपका शुगर कर सकते हैं और उसके लेवल देख के समझता है कि आपको ये प्रेगनेंसी में डायबिटीज है या नहीं है. बहुत बार प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होता है या शुगर लेवल जो बढ़ती है वो बहुत बार 6 महीने के बाद ही बढ़ती है. तो अगर आपने पहले 3 या 4 महीने में भी आपके शुगर लेवल्स किए हुए हो तो यू विल हैव टू रिपीट देम अगेन. आपको 6 महीना चालू होने के बाद वापस रिपीट करना इक्वली जरूरी है. दूसरा इन्वेस्टिगेशन जो इक्वली जरूरी है या आपका थायराइड.
थायराइड लेवल जितने जल्दी आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, द अर्लियर स्टेज दैट यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, यू नीड टू गेट योर थायराइड लेवल्स। क्यों? थायराइड दो टाइप के होते हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। दोनों में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इसको हम टाइम पे या टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में और बाकी के डेवलपमेंट इफेक्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो थायराइड जितना जल्दी हो उतना करना पॉसिबल है, उसका ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में होना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। The next reports is there are certain infections which are pretty common during pregnancy. जैसे मतलब वो करना जरूरी है because they can go to your baby and they can infect your baby. तो ये है HIV, HBsAg, VDRL, HCV। तो ये आपके प्रेगनेंसी में इनिशियली जब भी whenever your pregnancy is diagnosed, whenever your pregnancy is detected, it is important कि ये आपके इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। तो ये है बेसिक ब्लड रिपोर्ट्स जो हमको प्रेगनेंसी में करने होते हैं। ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द पेशेंट ये कितने बार करने होते हैं और कब कब करने होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है। इसके बाद तो सेकेंड इन्वेस्टिगेशन जो प्रेगनेंसी में बहुत ही जरूरी होता है, उसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। अभी नॉर्मली प्रेगनेंसी में हम कितने बार सोनोग्राफी करते हैं? अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी डायग्नोस हुई है, आप आपके गायनेक के पास गए हैं, तो आपकी गायनेक आपको डेफिनेटली सोनोग्राफी एडवाइस करेंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं? जो सोनोग्राफी हम पहले 3 महीने में करते हैं, 1.5 महीने पे या 2 महीने पे, उसे हम क्या देखते हैं? एक तो वी सी फॉर फीटल वायबिलिटी। फीटल वायबिलिटी मतलब बेबी के हार्ट बीट्स आए हैं या नहीं आए हैं। देन वी ऑल्सो सी कि अगर दिस प्रेगनेंसी इज इन द यूट्रस और इज इट इन द ट्यूब, मतलब ये यूट्रस में ही प्रेगनेंसी है या ट्यूब में है या कहीं और है, वो देखना भी जरूरी होता है। बहुत बार अर्ली प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग होता है, बेबी के आजू बाजू में ब्लड क्लॉट होना पॉसिबल होता है, जिसे वी कॉल इट एज सबकोरियोनिक हेमरेज। तो वो भी ये प्रेगनेंसी में डायग्नोस होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका बेबी कितने दिन का है, व्हाट इज द एग्जैक्ट जेस्टेशनल एज ऑफ योर बेबी, is most accurately understood if you go for a first trimester ultrasound. The next ultrasound or the next sonography which is recommended is called as the NT scan. NT scan मतलब जिसे कहते हैं हम न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। उसमें बेबी के नेक का एक थिकनेस देखा जाता है, उससे अब हमें ये समझता है कि बेबी में कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं है। So that is also a very important scan. ये स्कैन 11 to 13 weeks यही gestational age में, so the most correct time where you get this scan done is between 11 to 13 weeks, and along with it there is another blood test that can be done which is called as the dual marker test. This will more confirmatively tell you whether the baby has any anomalies, that is chromosome associated problems or not. So the sensitivity of this test is very high. So if it is done, it will tell you if there is any problem or not. The next sonography which is very important is called as the anomaly scan, जिसे हम anomaly scan कहते हैं। ये स्कैन 18 to 20 वीक्स मतलब 4.5 से 5 महीने के बीच में किया जाता है। अनोमली स्कैन में हम क्या देखते हैं? एक तो ड्यू डेट कंफर्म होता है, बेबी का जेस्टेशनल एज कंफर्म होता है, और बेबी में क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, मतलब सर से पैर तक व्हाट आर द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन योर बेबी, यू फाइंड आउट इन दिस सोनोग्राफी। क्योंकि इसके बाद जब भी बेबी बड़ा होते जाता है तो ये फाइंड आउट करने के चांसेस और कम होते जाते हैं। So the optimum time in which you get your pregnancy sonography done for anomalies is between 18 to 20 weeks of gestational age. उसके बाद सोनोग्राफी कब करते हैं? अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छे से जा रही है, देयर आर नो प्रॉब्लम्स, देयर आर नो हाई रिस्क फैक्टर, द नेक्स्ट सोनोग्राफी शुड आइडियली बी डन समवेयर बिटवीन 28 to 29 weeks. This is just to see the baby's growth. If the growth is occurring optimum, the fluid around the baby is fine, the baby weight is increasing. If this sonography is also fine, you need to do one sonography once you enter your 9th month. मतलब जैसे ही आपको 9वां महीना लगता है, एक सोनोग्राफी करना जरूरी है। इसमें हम क्या देखते हैं? फिर से ड्यू डेट एक बार कंफर्म होता है, बेबी का वजन देखते हैं, बेबी के बाकी सब पैरामीटर्स नॉर्मल है या नहीं वो देखते हैं,
amniotic fluid, जो बेबी के आजू बाजू का पानी होता है, whether your amniotic fluid levels are fine or not, बेबी की पोजीशन क्या है, बेबी के हेड नीचे है या ब्रीच जो हम फुट फीट बोलते हैं वो नीचे है, तो ये हेल्प करने के लिए कि नॉर्मल डिलीवरी के कितने चांसेस है। और ऑब्वियसली प्लासेंटा, प्लासेंटा मतलब जिसे हम बेबी का वार बोलते हैं, वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, और ये हर सोनोग्राफी में देखा जाता है, राइट फ्रॉम द न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन टू द फाइनल स्कैन। सो कम से कम 3 प्रेगनेंसी मस्ट है जो इन द एंटायर प्रेगनेंसी हैव टू बी डन। बाकी डिपेंडिंग ऑन वुमेन टू वुमेन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड, whether there is any pain or anything bleeding associated, you may have to go for 1 or 2 more sonographies based on your case. But these 3 sonographies are extremely essential during pregnancy. I think let's see what are the questions which are there. So Lakshmi Nair is asking, please talk about low-lying placenta. So, like I just mentioned, low-lying placenta means when the placenta is in the lower segment, that is above the mouth of your uterus. Now, what are the problems that you can have associated with it? You can have bleeding right from your first trimester till pregnancy. Most of the times, in almost 80 to 85% of the cases, as your pregnancy progresses, this placenta goes higher up. So, there is no need to really, go for cesarean section. But in 15 to 20% of the cases, this placenta does not go up; it stays low lying. So you will have to be prepared that you may have to go for a cesarean delivery. So next question is protein powder necessary? Protein powder may not be absolutely essential, but the protein requirement in pregnancy is quite high. And we being Indians having a vegetarian diet, definitely the protein content in our diet is less. So we need at least 1 gram of protein per kg. Means if your weight is 50 kg, you need 50 grams of protein per day. A little higher if your weight is less. So protein powder may not be necessary, but it will definitely help the growth of your baby. The next question is, what if we couldn't do NT? Will anomaly scan reveal problems? Yes, if you are unable to do the nuchal translucency scan for whatever reason, if you have not done a NT scan, if you have gotten your anomaly scan done at the right time, that is between 18 to 20 weeks, it will reveal most of the anomalies. There are some anomalies which are not revealed in both these scans, but yes, an anomaly scan done at the right time in the right hands will reveal most of your anomalies. Next question is by Poonam. Hello, doctor. I am 7 weeks pregnant. I have white discharge. Is this normal? Yes, having white discharge during pregnancy is absolutely normal. You can have white discharge from the time that you have gotten pregnant till the time you are about to deliver. This is because in pregnancy, the cervix, which is called the mouth of the uterus, keeps on secreting white discharge. So, if when should you be worried for this white discharge? If at any point of time your white discharge is cheese or curd like, it is foul smelling, you are having a lot of itching, a lot of redness associated with it, you may have a candidial infection. You need to go to your gynec and get treated for it. If you are already in your 8.5 months and this watery discharge is like fluid, your clothes are getting stained, your undergarments are getting stained, there can be chances that you have leaking PV, and again you need to immediately go to your gynec. The next question Rachana has is, will thyroid affect on my baby? See, thyroid, if your thyroid is normal during your pregnancy, there will not be any problems. So the most common thing of thyroid that we see during pregnancy is that you have hypothyroidism. By hypothyroidism, it means that the baby's your thyroid is not secreting enough thyroid hormone, and thyroid is very important for baby because thyroid hormone is extremely important for the brain development of the baby and the overall growth of the baby. So it is very essential that you get your thyroid done, and if it is abnormal, you need to start its treatment as early as possible for the optimum growth and development of your baby.
The next question is, are there activities I should avoid in the first trimester of pregnancy? See, the first trimester of pregnancy is extremely important for the growth of the baby. So, the main growth of the baby, that is the internal organs, the external organs, the main development occurs during the first trimester. So, certain activities should definitely be avoided. You should avoid lifting heavy weights in the first trimester. You should avoid having sexual intercourse during first trimester. You should avoid traveling on bike or any surface which is going to cause a lot of problems to the baby, lot of movements, jerky movements, so that can affect your baby. So all these activities should definitely be avoided during first trimester. Is lovemaking safe during pregnancy? See, like I said, it is better if it is avoided during the first trimester, and especially once you've reached a ninth month of pregnancy, because having sexual intercourse or lovemaking is also known to cause labor pains. So during the second trimester is the safest period where you can enjoy lovemaking or having sexual intercourse without any worries. Do we have any more questions? I feel so tired. How can I help myself feel better? So that is our next question. So feeling tired in pregnancy is a pretty normal thing. It is very common to feel tired. What you need to make yourself feel better is make sure that your diet is good. You are eating every 2 to 3 hours. You're hydrating yourself properly. Your gynec will definitely be prescribing you some nutritional supplements like iron, calcium, folic acid, and protein powder if you require. Make sure you're having them on time. Make sure you're resting properly. So that will help you feel less tired. I've had breast implants. Can I still breastfeed my baby? So this is a very important question. Breast implants definitely reduce the amount of tissue in breast. So it depends on what kind of breast implants have you had, how big they are, how much of your normal breast tissue has been removed. So even pre-delivery, it would be better if you have a session with a lactation consultant to help you really solve this issue. How long should I be allowed to go past my due date? So by due date, what ideally is followed all over the world, the due date is taken at around 40 weeks. If everything is fine, definitely you can wait for at least 1 week after your due date. Let me be very particular about this. If everything is fine, there is nothing wrong with you as such. The baby is fine, baby weight is fine. But obviously, going past the due date can definitely have some problems. So it's better to consult and confide and have a detailed conversation with your gynec regarding this when you're nearing your end of your pregnancy. So what are the stages of labor? There are three main stages of labor. The first stage of labor is from the time your labor pains start till the time you become approximately around fully dilated, that is 10 centimeters. Second stage of labor is from the time you become fully dilated till the time the baby comes out. And the third stage of labor is from the time your baby comes out till the time your placenta is delivered. And 1 hour after that is normally labeled as the fourth stage of labor. How long does it take to push the baby all the way out? Now, that totally depends on what kind of situation you are in. So, ideally, the second stage, that is from the time you are fully dilated till the time the baby comes out, in a primee, means for whom it is a first pregnancy, it is approximately 2 hours. 1 hour, and in 2 hours, and in a multi patient, that is when she's had more than one pregnancy, it is approximately 1 hour. But it also depends on a lot of other factors, like how much is the baby weight, how much is the liquor, has it drained or not, exactly in what position is your baby. So all these factors also play a role in how much time does it take. Any other questions do we have, Nana? So I think we are almost done with all the questions.
I would really like to thank Baby Chakra for giving me this opportunity to have this session. And thank you all for all your questions.